देखिए 20 साल से यही सुना है कि शोएब मलिक जो है ना जिसने हमारे उनके जो पहले जो 6 ओवर होंगे ना बहुत क्रिटिकल होंगे। अगर हमने उनको उनके 2 या 3 बैट्समैन को आउट कर दिया और हमने उनको होल्ड कर दिया तो आई थिंक शादाब एंड नवाज कैन बी वेरी impactful in the middle overs because वो उनको मारने की कोशिश करेंगे, they have to because they don't have the run, but अगर उन्होंने तो विन और लूज जीते हारे हमें तुमसे प्यार है, बट जलील मत करवाना प्लीज, खुदा का वास्ता है। वन साइडेड मैच मत करवाना यार। मत देना भाई। in that game I think जब 3 ओवर वगैरह रह गए थे तो we thought we'll cruise through, the game is ours. Yeah. And then that कोहली ने जो 2 छक्के मारे and then the last over. I think शोएब मलिक जो लॉकर रूम में जो उसके जो एंटिक्स है ना और जो उसका जो सेलिब्रिटी नेचर है, I think that is probably not constructive for Babar because Babar is like यार मेरी टीम बनी हुई है यहाँ पे, तुम आओगे, एक तो वो सीनियर है, राइट, एक तो उसकी वो एक और बड़ी आवाज बन जाएगा लॉकर रूम में। So I think that's the biggest reason why he wants to keep him away. और फिर उसने ट्वीट किया था liking disliking right after एशिया कप हारने के, वो तो उसने अपना basically put a nail across and then I'm done. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम हसन है और आप सब मीट हसन पॉडकास्ट की एक और किस्त मैं आप सबको खुश आमदीद। आज एक स्पेशल एपिसोड है क्योंकि कुछ स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, क्योंकि आज एक स्पेशल दिन है। आज रात को हमारे हिसाब से यानी नॉर्थ अमेरिकन के हिसाब से पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड वर्ल्ड कप T20 2022 का फाइनल मैच है। यकीन आ रहा है आप लोगों को? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो रही हैं और मैंने सोचा कि जो एक्सेसिव पैल्पिटेशन है हम सबको इस वक्त जो एंटिसिपेशन में आज रात के जो मैच है 3 बजे जो हमारे हिसाब से शुरू होगा, उसको हम किसी प्रोडक्टिव काम में यूज कर लें। इसीलिए मैंने अपनी पॉडकास्ट में मदऊ किया है आसिफ आलम एके आसिफ भाई और नबील शमीम एके नबील को। दोनों ही बहुत ही पैशनेट क्रिकेट लवर्स हैं, बहुत गहरी निगाह रखते हैं गेम के ऊपर। आसिफ भाई ने का अगर मैं तारीफ करवाऊं, उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर का आगाज डिफेंस फेस 5 से किया। कराची में राइट आर्म स्लो मीडियम बॉलर के तौर पे उभर के सामने आए ये, और सीधे ही हाथ से बल्लेबाजी करते सुनने में आए, काफी जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हैं ये, और आजकल सैन फ्रांसिस्को की गलियों में क्रिकेट के खेल को फरोग दे रहे हैं एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी। नबील शमीम की क्रिकेटिंग क्रेडिबिलिटी ये है कि ये क्रिकेट देखते बहुत अच्छा है। इनकी जो एनालिसिस होती है क्रिकेट की गेम से पहले और गेम के बाद फेसबुक के ऊपर, वो आप मिस नहीं कर सकते। और मेरी क्रिकेटिंग जो क्रेडिबिलिटी वो तो मैं बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश कर चुका हूँ 2-2.5 महीने पहले। हमने एक पॉडकास्ट की थी मैंने और भैया ने, और उसका जो पॉडकास्ट का टाइटल है वो अगर आप पढ़ लें तो उसका टाइटल ये है कि व्हाई पाकिस्तान इज विनिंग दिस वर्ल्ड कप, एंड दैट इज आफ्टर पाकिस्तान लॉस्ट टू श्रीलंका वेरी बैडली। बहुत बुरी तरीके से शर्मनाक शिकस्त हुई थी पाकिस्तान को श्रीलंका के साथ, और मैंने ये प्रेडिक्शन उस वक्त कर दी थी 2.5 महीने पहले कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत रहा है। तो अब आप मुझे गुरु कहना चाहें, उस्ताद कहना चाहें, अब्बू कहना चाहें, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, इसमें मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। तो यकीन नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान पहुंच गया है वर्ल्ड कप के फाइनल में दोस्तों, और मतलब और दैट टू विद अगेंस्ट अ साइड लाइक इंग्लैंड, तो समझ से बाहर है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा डाइव इन करें बिफोर वी टॉक अबाउट द फाइनल। मैं चाहूंगा कि ओवरऑल what is your take on Pakistan's performance in this World Cup so far? Asif, you first, and then Nabeel. Yeah, thanks a lot, Hassan. First of all, great to be here. My view is that I'm always very clear on one thing, that Pakistani team, no matter what you do, the best part of Pakistan is that they are inconsistent. And with that comes the fact that on any given day they can lose to team like Zimbabwe, or any given day they can beat team like very consistent and reliable New Zealand. So that's our strength and weakness also. उसको अगर आप साइड पे रख दें तो मैं ये कहूँगा कि इस वर्ल्ड कप में एक चीज जो भी हमने बड़े स्लो स्टार्ट किया एंड देन वी हैव पिक्ड इट अप, बट वन थिंग दैट इफ यू रियली आस्क मी कि पाकिस्तानी टीम की क्या अच्छी लगी है मुझे और बहुत आई एम रियली एंजॉयिंग इट, इज अ बॉलिंग अटैक। इवन इन द गेम्स वेयर वी लॉस्ट, इंडिया के साथ जो हुआ, जो आखिरी 2 ओवर में हुआ, वो दैट्स टोटली डिफरेंट, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। बट अगर आप डेटा पॉइंट के तौर से देखें तो पाकिस्तान
वाहिद का जो अगर बॉलिंग एवरेज देखें एक किसी ने डाला था, हमारा बॉलिंग एवरेज सबसे अच्छा है, हमने सबसे कम रन्स दिए हैं सारी टीमों के साथ। तो दैट इज अ फैक्टर। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो है उसमें बाउंस होता है। आई नो कि हमारा बहुत ही, इंग्लैंड इज अ वेरी बैलेंस टीम एंड दे कैन डू वट एवर इट इज, बट आई फील कि जो है वी हैव अ वेरी गुड चांस, you know, and I think both the teams are amazing. Yeah, but we have a very good chance to go out and the game will, I think in many ways, in my view, will be decided in the first 6 overs. It's the power play, frankly. You know, the first 6 over of Pakistani batting and the first 6 overs of England batting. More so the England We batting. we will get to the final match, but before that, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब इंडिया के साथ पाकिस्तान की एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग डिफीट हुई थी, पाकिस्तान हैड ऑलमोस्ट वन दैट गेम। मैंने तो नहीं देखा, मेरे बस के बाहर की बात है, पाकिस्तान इंडिया के गेम्स तो मैं नहीं देख सकता, मैं हाइलाइट्स में अगर हिम्मत हो तो देख लेता हूँ या स्कोर चेक कर लेता हूँ, लेकिन जो मैंने देखा बाद में, आई मीन कितना हार्ट ब्रेकिंग था। क्या आप लोगों की, क्या आपकी वो थी, हसन, मेरा तो रिएक्शन था? मैं तो आई एम अ वेरी इमोशनल, यू गाइस नो कि आई एम अ वेरी इमोशनल, एज आई से कि आई ओन माय टीम। और अगर मुझे कोई कहता है कि तुम क्यों क्रिटिसाइज करो, मैंने कहा मैं उनको प्यार भी उतना ही करता हूँ। तो मैं, यू नो, आई फील लाइक दिस इज माय टीम एंड आई हैव ऑल द राइट टू क्रिटिसाइज देम एंड आई हैव ऑल द राइट टू लव देम as much as I do. That day, I can tell you with all honesty, I think for the next 48 hours, it was heartbreaking, right? I mean, because there was a point in that game, I think जब 3 ओवर वगैरह रह गए थे, तो we thought we'll cruise through, you know, the game is ours. Yeah. And then that Kohli ने जो 2 छक्के मारे, and then the last over, whatever happened. So it was very heartbreaking, right? Especially not only a game of cricket, but then you lose to India, and in the first game, right? And so that was very hard for me, at least. I'm sure Yeah. Nabeel. Yeah, no, I think, yeah, I mean, एक जो feeling थी उस मैच के बाद, I think pride थी, right after जो हारे थे हम, इतनी, मतलब मेरी personally, क्योंकि मैंने जो कुछ मैच देखे हैं, और मैं जो हूँ, जैसे आसिफ भाई कह रहे हैं, हम लोग we feel like we own the team because we also go to these matches. आसिफ भाई भी इंग्लैंड गए हैं, मैं भी गया हूँ, दुबई गया था last year. तो वो जो in person जो हम लोगों ने defeats जो देखे हैं, उससे अगर आप compare करें तो जो इंडिया से जो पहला मैच हारे थे, we played really well, right? तो इतनी मेरी जो इतनी खराब फीलिंग नहीं थी। अच्छी जिम्बाब्वे के हारने के बाद तो ऑब्वियसली सबकी खराब फीलिंग हो गई थी, लेकिन इंडिया के जो मैच हारे थे वो ऐसा था कि हम नहीं हारे थे, विराट जीत गया था, राइट? तो we were appreciating that, and एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब थी कि you know it's a good team, boys are playing amazing, टैलेंट बहुत है। तो आई वाज होपफुल, फिर उसके बाद जिम्बाब्वे के हारने के बाद तो मतलब कि we were like what the, अब क्या होगा? And I honestly, क्या आप लोग, yeah, I loved all, yeah. sorry to cut you. इंडिया वाले मैच में, where do you think we went wrong? कहाँ पे लगा कि हमारी गलती हुई है? Yeah, I think from my perspective, I think India did a lot of right things, right? I mean, Pakistan, yeah, आप डालें, you know, आप उस पे blame डालें कि नवाज ने कब bowling की और आखिरी क्यों की और उसने wide कराई और no ball कराई. But at the end of the day, it was like, वो कहते हैं ना, in cricket, and you know, I watch a lot of sports. Cricket is the sport जिसके अंदर बहुत सारे variabilities हैं. But there's so many things that can affect the outcome of a match, right? Toss है, वो है, सीम कितनी हो रही है, विंड कैसी जा रही है, किसने बैटिंग पहले की, किसने दूसरी की, तो देयर सो मेनी वेरिएबिलिटीज। उसमें बस इंडिया का, it was India's day, right? And it was really Virat Kohli's day that day, and I think that he really took the game from us instead of us really handing it to him, right? आप अगर हारिस को आप 2 छक्के मारोगे तो like you know you deserve it. I have a viewpoint on that. If उसमें हसन Please. के, मुझे ये लगता है कि our team selection was not right in that. You know, you when you're going in World Cup, you have to have, you know, a very aggressive mindset कि जी हम अपनी bowling पे depend करेंगे, हम अपनी batting पे depend करेंगे। उसमें ये लग रहा था कि हमने जो है ना एक कम bowler खिलाया था और हम अपनी batting पे जो है ना हमें believe नहीं था। और जो वसीम जूनियर को आपने बैठा दिया, दैट वाज अ बिग, यू नो, प्रॉब्लम। सो वी कैन टॉक ऑल अबाउट लक कि जी नो बॉल यहाँ पे हो गई या नहीं हुई या ये वो, दोज आर, इट हैपेंस विद एवरीबॉडी, राइट? आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज थ्योरीज कि जी ये हुआ वो हुआ, बट अगेन व्हाट आर थिंग्स दैट आर इन कंट्रोल ऑफ आवर टीम, राइट? अगर हम क्या चीज कर सकते थे जो कि
उस गेम को वो सारी चीजें आती नहीं कि इट्स अनफेयर टू आस्क नवाज टू bowl the last over, and on top of that I thought, right, I'm just a fan, but I thought कि जी you are a you bowl spin. आप अगर आपने देखा हो कि वो मीडियम पेस करने की कोशिश कर रहा है, रिजवान भी पीछे खड़ा हुआ है, वो भाग के आ रहा है बॉल. आई मीन यू आर नॉट अ मीडियम पेसर, व्हाई आर यू बॉलिंग दैट, राइट? द लास्ट ओवर अगेंस्ट कोहली जिसने 2 छक्के मार चुका है, द बेस्ट डेथ बॉलर रऊफ को. तो आई थिंक लॉट ऑफ वी it's World Cup and these games, especially Pakistan and India, it's all about nerves. Yeah. And unfortunately, we lost the game of nerves at that moment. At the beginning, we were defensive, and in the last few overs, we did not held our nerves, and we did not had that. It was not about we'll win. It was about कि यार बस ये छक्का ना मारे, हम क्या करें, So I think the other India match अगर आप देखें तो अभी पहला गेम था तो you were still trying to figure out your player combination, right? तो गलती हुई है, लेकिन वो जो सबसे बड़ी जो issue था ना, और ये बाबर का issue है दिमाग में for the last 2 years is the Asif dilemma, right? He doesn't know what to do with Asif, right? He feels like एक दिन Asif जिता देगा, 10 game नहीं जिताएगा, and they kept Asif in the team, and that ended up. Now I'm glad that the Asif dilemma is like, we can put that aside, like put him aside, उसको team के साथ रखो, नहीं ना रखो. I think that question is answered, right? I think that was the issue. Him being in the team caused Wasim to be out of the team, and that's what happened. I think in the first game, I completely agree with both of you. We were short on resources because of the fact that we just didn't know how it's going to play. I mean, we didn't know the conditions well. It was the first game of the tournament. हम लोग को आइडिया ही नहीं था कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए. वसीम जूनियर को खिलाना है या हसन काम कर देगा, नवाज काम कर देगा हमारा. Nawaz had performed really well in Asia Cup. So, I don't blame Babar to think Nawaz. I mean, of course, nobody would want to give him the last over. So that was a major blunder. But at the end of the day, they didn't have any reference point at this point in time. First game of the tournament, they didn't know. So I give Babar complete benefit of doubt as far as the first game is concerned. They performed really well. And I completely agree with you, Nabeel, on the Asif dilemma. Asif was a huge dilemma throughout the past 2 years since the time Asif has made like a permanent position in our team. कि यार ये करेगा, ये अब चल जाएगा, अब करना शुरू कर देगा परफॉर्म, अब ये जिताना शुरू कर देगा, अब ये हार्दिक पांड्या बन जाएगा, अब ये बेन स्टोक्स बन जाएगा, ये नहीं बनेगा बेन स्टोक्स. ये मैंने भी कई दफा मैं propagate करता रहा हूँ Asif की inclusion in the team, but he has just not done justice to whatever that he has, whatever talent that he might have. We will never know, right? Because we don't know, because he hasn't, aside of 4 or 5 games जो उसने जिताए single-handedly. Lekin the problem is the moment he gets more than 8 overs or 6 overs, more than 12 balls even, he just doesn't know what to do with it. मतलब 12 से ज़्यादा बॉलें तो खेलनी नहीं आती ना उसको. Yeah, Asif ये Babar का X factor type है. He really, and the thing about Babar is, right, he's trying to back players that he believes in, right? So I mean that's just what a captain should do. अब वो जो उसने काफी लंबा खींच लिया, लेकिन I think Asif hopefully is now. My only thing, Nabeel, there is ke, one area. I mean, I know Babar has taken our team to semi-final last year, and again he has taken this team to the final. So I have no legs to stand on to provide feedback to Babar. But one thing I'll say is that he needs to be more pragmatic in the sense कि जी ये नहीं है कि जी एक आपने पर्ची पे लिख दिया है कि ये टीम है तो बस इसी टीम से जाएगी. अभी मैं कल बैठे हुए वैसे ही हाइलाइट्स देख रहा था कुछ पुराने गेम्स की, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की. उस पे डेविड मलान, who is a number 3 world ranked batsman, amazing batsman, he batted number 8 just because how the game was progressing, right? So the one thing that I feel like just like that you need to स्टार्क को उन्होंने बैठा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, कुछ अभी कुछ गेम पहले वो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई भी नहीं की. बट माय पॉइंट कि T20 इज सच अ डायनामिक गेम कि ये नहीं है कि जी आपकी जो टीम है जिसने दुबई में आपको गेम जिताया है वही टीम आपको ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में या मेलबर्न में या गैबा में जिता सकेगी, इसलिए कि एनवायरनमेंट डिफरेंट है, बाउंड्रीज डिफरेंट है, पिच डिफरेंट है, बाउंस डिफरेंट है, and everything is different, right? So you have to play according, and I think Nabeel said it right कि उसने कि जी क्रिकेट गेम में जो है एक तो आप सिलेक्शन करते हैं, आपकी टीम को फॉर्म में होना चाहिए, फिर एनवायरनमेंट प्लेज अ बिग पार्ट इन इट कि जी आपको स्क्वायर कट मारना है या सीधे मारना है, राइट? कितनी बड़ी बाउंड्री है. अब वो
यहाँ पे एक और चीज जो अगेन फ्रॉम अ टेक्निकल परस्पेक्टिव विच इज प्रीटी बिग राइट फॉर साउथ एशियन प्लेयर्स, या अगर इफ यू प्लेइंग इन साउथ एशिया वर्सेस यू प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, के यहाँ स्पेशली इन T20 के पिचेस में घास काट देते हैं, ये Yeah. करते हैं, बाउंस होती है, तो यहाँ जो है देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि आप जब बैट कर रहे हो तो आप फ्रंट फुट पे नहीं जाएं, आपको कभी बैक फुट पे भी आके शॉट खेलना होता है। जबकि दुबई वगैरह में जहाँ पे आसिफ अली हैज ट्रेडिशनली डन Better. ओके, आई वोंट से वेल, वहां Yeah. पे बस ये कि पैर निकाले और मारे, Right. राइट? तो वो चीज आप यहाँ भी नहीं सकते हैं कि सिर्फ पैर Right. निकाले और मारे। अगर आपने बॉलर को दिखा दिया, वो तो आपको खा जाएगा, वो तो आपको, एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। That's exactly what's happening, and you rightly बिल्कुल सही कहा आपने. You need to be a more of a back foot player in Australian conditions than a front foot player. Before the World Cup, बहुत ज़्यादा criticism था कि यार team selection के ऊपर. I'm not talking about the playing 11. I'm talking about the team selection. बहुत ज्यादा बातें मोहम्मद वसीम के ऊपर जो चीफ सेलेक्टर है कि यार इसको क्यों डाला, शोएब मलिक को डालना चाहिए. शोएब मलिक के ऊपर बहुत बातें थी इन प्लेस ऑफ इफ्तिखार. देन मोहम्मद वसीम के ऊपर कुछ लोग बातें कर रहे थे. हारिस के ऊपर अभी तक मैं 2 दिन पहले तक मैं सुन रहा हूँ कि हारिस के ऊपर बात हो रही है कि यार सैफी को लेके जाना चाहिए, सरफराज को क्यों नहीं लेके गए, एक्सपीरियंस आपको विकेट कीपर चाहिए था. What do you have any opinion on that? ये कौन कौन कह रहा है कि सैफी को लेके आना चाहिए, कौन because that's not, ये तो वो हो गया ना liking and disliking वाला वो हो गया कि because you know Safi is from one part of the country you want him. But I mean I think देखो एशिया कप का जो आउटपुट था ना, we played well till वो जो last 2 games है ना, उसके बाद जो questions तो आएंगे because that performance against Sri Lanka 2 games in a row was hard, right? और उसके अंदर जो biggest issue यही था ना, आपका middle order था ही नहीं. तो उसके बाद I think शोएब मलिक का जो इंजेक्शन था कि शोएब मलिक को शायद लाना चाहिए, I mean there's credibility to that argument whether you agree or not. I mean he is a very fit player, उसके experience है, और जब आपका बिल्कुल है ही नहीं मतलब कि middle order, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब आके हो गया मिडिल ऑर्डर, और वो भी जो हुआ है वो हारिस जो एक वो कहते हैं ना कुदरत का निजाम जो है, the reason why Haris is in the team is because Fakhr got hurt. If Fakhr didn't get hurt, Haris would not be playing. We wouldn't be seeing Mohammad Haris doing what he's doing, right? So yeah, I think Allah की तरफ से ये तोहफा है कि Mohammad Haris is playing, because that's not Babar's. It's not like Babar or Mohammad Wasim really thought about this. It's just they lucked out that Mohammad Haris is in the team. No, but at the same time, they did select him in the reserves, right? He was still part of the playing. He was part of the 16. If you watch PSL, I was also looking at Mohammad Haris as well. Asif, I don't know if you saw Mohammad Haris. Yes, I did. Yeah. He's an opener in the PSL, and he's the only guy who seems like he plays aggressive from the first ball. वो टुक करता ही नहीं है, वो जो he's right off the bat. यार इसमें जो है ना, I have I mean, we need to look at data points. So yes, again, it goes back to the point where we started कि जो है ना, Pakistan has a very inconsistent team, and on a given day लोग चल जाते हैं, on a given day लोग नहीं चलते हैं. I would still criticize मोहम्मद वसीम या जो भी हमारे चीफ सिलेक्टर का नाम है, राइट? कि आप ये देखें कि पूरे समर में जो, और फिर जो है उसके एशिया कप या वो जो भी उससे पहले भी frankly, and then going into this year 2022, then going into the England series, हमारी middle order चली ही नहीं है, right? It was a big failure कि click हो ही नहीं रहा है, वो different चीजें try कर रहे हैं. Then you're going into the World Cup, you have to bring, I'm not saying drastic changes, but you need to do something. So one thing they did, right, was they brought in Shan at the last moment, right? In kind of कि जी वहाँ जो failures हो रहे हैं तो शान को जो है कि थोड़ा सा anchor हो. But hold on. Shan was only brought in because Fakhr got injured. हाँ, मगर concept wouldn't have made his place. हाँ, नहीं, मगर कॉन्सेप्ट वही था कि मतलब वो उनको इतना प्रेशर एक तो ईगो का भी बड़ा मसला होता है ना, ये सब हमारे खून में, हमारे ग्रीन जो डीएनए जो हमारा है इसमें, तो आई डोंट नो हाउ मच वाज ईगो और हाउ मच वाज व्हाट, बट आई स्टिल फील कि वी ऑन पेपर वी वुड हैव बीन अ बेटर टीम विद शोएब मलिक फॉर श्योर. अगर ये जो आप ये देखें ना कि खुशदिल जो है वो बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा है, आसिफ अली बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा है आपको, they are giving you absolutely zilch nada sifar, right? So you have to look at the construct of the team you have and who are the players who are not performing for a very long time. You have to look at the conditions of Australia and then see who have performed and who are the right folks. Safi ka I won't say, Safi does not
I don't think so. But sorry, excuse me. Who do you think मलिक किसकी जगह पे आना चाहिए था मलिक को? यार बहुत सारे हैं, आप जो है खुशदिल बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा। No. Playing 11. We're talking about playing 11. नहीं, Who आप do you तो think Malik would have replaced? I mean, he's like a bench man. I mean, he should be in the reserve. 15 में तो होना चाहिए ना उसको। अगर गेम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, पहला गेम अगर हो रहा है, तो आप हैदर अली को के खिलाफ खिलाएं, हैदर अली को नहीं खिलाएं, आप शोएब मलिक को उस टीम में खिलाते, राइट? तो आप जो हैं आई मीन देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? यू कैन नॉट, सो इफ्तिखार वाज अनदर, इट्स गुड कि इफ्तिखार इज फाइनली क्लिकिंग, चाचा जिससे वो बहुत नाराज होते हैं सुना उनको अगर आप चाचा कहें, मगर I'm glad he's performing, but he really did not perform before this tournament, right? So you are really, it's good that they are doing it, and it goes back to a very controversial thing, which thankfully it worked for us in the last game against in New Zealand, the opening pair. I have a very strong, even despite our performance in the game against New Zealand, I still have a very strong opinion. Okay, going forward, obviously you cannot change in the World Cup final, but we need to think about it, right? I mean, Absolutely. I think one thing Absolutely. one thing I want to say about Shoaib Malik is, I think Asif bhai, one of the things that we're not, एक जो रीजन देखिए टैलेंट वाइज आई कैन से ठीक है उसकी जगह बनती है, लेकिन आई थिंक शोएब मलिक जो लॉकर रूम में जो उसके जो एंटिक्स है ना, और जो उसका जो सेलिब्रिटी नेचर, आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली नॉट कंस्ट्रक्टिव फॉर बाबर, बिकॉज़ बाबर इज लाइक यार मेरी टीम बनी हुई है यहाँ पे, तुम आओगे, एक तो वो सीनियर है, राइट, एक तो उसकी वो एक और बड़ी आवाज बन जाएगा लॉकर रूम में, तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रीजन व्हाई ही वांट्स टू कीप हिम अवे। और फिर उसने जो ट्वीट किया था लाइकिंग डिसलाइकिंग राइट आफ्टर एशिया कप हारने के, वो तो मतलब वो तो उसने अपना बेसिकली he put a nail off in that I'm done. And I think he wrote that tweet knowing he's not making it. Yeah. He wouldn't have written that tweet if he had a chance. क्योंकि he still wants to play. उसने को yes, absolutely. उसने कहा कि मैं जो ना लिख देता हूँ, क्योंकि ये देखिए 20 साल से यही सुना कि शोएब मलिक जो है ना is a snake, right? Yeah. He's a very क्या कहते हैं, interesting personality. So one thing which Babar has done really well, right, in this team is, to your point, Nabeel, is I really like the vibe that the team has. कि unity है, unification है, कि जी वो रिजवान भी जाके जब 50 बनाता है तो वो बाबर की बात कर रहा होता है, शादाब भी 3 विकेट लेता है तो वो कहता है जी मेरा कप्तान जो है उसने ये किया है, शाहीन अफरीदी भी जो है वो अमेजिंग बॉलिंग कर रहा होता है तो वो कहता है, तो which is a good thing, right? Because in these things you do need a leader who everybody looks up to or respects. तो अगर वो एक, तो to your point Nabeel, के if Shoaib Malik is that guy who's creating के यार बिला वजह के, so is there a value to that or not? And I'm not in the disagreement to that. And Ramesh Raja also, I think he referred to Shoaib कि उसने एक्चुअली वही बात आ रहा था कि शोएब मलिक को डालो, तो उसने कहा ऐसा नहीं है कि हमारी, उसने कहा था ऐसा नहीं कि हमारे बेंच पे मेसी बैठे हुए या इमरान खान, right? It's Shoaib Malik. Shoaib Malik is not a legend, right? He's a good player, but he's not at 40. He's not a great player to mess up the team. Absolutely, the camaraderie जो है अभी टीम में, मेरे ख्याल से मैंने अपनी जिंदगी में तो कभी ऐसी इतनी ज्यादा जो एका है टीम में, वो मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। इससे पहले वर्ल्ड कप 92 की टीम थी, इमरान खान की, हाँ वो एक डिक्टेटर था इमरान खान, सब लोग डरते थे इमरान खान से, बट जो आज हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से 1.5 साल से जब से बाबर ने चार्ज संभाला है, we haven't seen this before. I personally haven't seen this. I will say, I will disagree with you a little bit. I will say कि जब नबील हम लोग जब थे 2019 में, I think जो वर्ल्ड कप था लंदन में, इंग्लैंड में जो हो रहा था, उस वक्त भी टीम से इंटरेक्शन हुई थी, और I'll give this to सरफराज के जो है, उस वक्त भी टीम में people were looking up to सरफराज, उस वक्त दूसरे मसले थे, टीम में सही वो लड़के नहीं थे, तो उन्होंने ये चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह से हमने जीती थी, इंडिया को हराया था, वो सब यंग लड़के थे, उसमें भी वो उम्फ था, यानी उस टीम में ये था कि इट वाज, इफ यू रियली लुक एट आवर विन अगेंस्ट इंडिया in the finals of Champions Trophy in 2017 which Sarfraz led, that team was not about कि जी नबील परफॉर्म करेगा, मुझे 10 विकेट लेनी है, हसन कह रहा है कि मुझे 5, उसमें जो है ना, it was all about teamwork, कि we have to go out and win. And that's what I like about the team we have right now, where yes, Shaheen is taking wickets, but Shaheen wants to win. That's the number one thing. He doesn't want to
and take 5 wickets. I think Okay. Sarfaraz, he was a great captain, but issue with Sarfaraz was that he didn't have the talent to back up his place. Yeah, he just didn't perform. उसकी performance अपनी कोई question है ही नहीं. Like the entire world, अगर आप top 11 pick करें तो Babar will be in that team. So that helped Babar, I think, more than Sarfaraz. Exactly right. So we've talked a lot about Pakistan's अभी तक की जो performance रही पाकिस्तान की. एक सिर्फ मैं बात करना चाहूँगा selection committee के ऊपर. I for one, I disagree with both of you. मेरी 100% confidence है in the selection committee more than ever before. मेरे ख्याल से मोहम्मद वसीम is doing a wonderful job. I think वो होते हैं, मतलब likes dislikes होते हैं for sure, favorites होते हैं, हर जगह पे होते हैं, captain के भी होते होंगे, selection committee के भी होते होंगे, लेकिन I can clearly see why Shoaib Malik wasn't picked for whatever reasons that we have discussed today. Shoaib Malik, अगर आप record उठा के देख लें in Australian conditions, abysmal record with a high bounce pitches, abysmal record. और compared to इफ्तिखार, अगर आप उसका record देख लें, सही है 2 साल पहले का record ही है, लेकिन he's performed really well और वो नजर आ रहा है. So I think he's proved himself. The chief selector has proved himself. Babar has proved himself. जैसे भी किया, जिस भी तरीके से लुढ़कते final में पहुंच गए, I think there's no question about their credibility, integrity और जो वो just honesty से वो लोग team select कर रहे हैं. हाँ, गलती हो सकती है इधर-उधर, but I don't question their integrity. Where do you think we are lacking the most right now as a team? अभी openers का मसला हल हो गया, middle order का मसला more or less हल हो गया, bowling हमारी world class है, it's probably the best bowling attack in the entire world. Where do you think we are lacking right now? So I will say something very controversial, which people will not like to hear right now, that especially before the final. But I still think that where we lack is the openers. Yeah, despite the fact that Babar and Rizwan has 3 highest number of 100 century records and all that. Here is why. Yeah. अगर आपको टारगेट मिलता है ना कोई 150 160 and you have to chase, we are the perfect team, right? And in that scenario, Babar and Rizwan should and must open, right? And that's where I'm saying you need to be pragmatic given on the situation or on what it is. But here's the challenge. The challenge is that अगर आप को कोई अगर फर्ज करें कोई और टीम पहले जाके बैटिंग करती है और हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, अमेजिंग बॉलिंग, बट व्हाट इफ दे स्कोर 185 190, the our intent in the first 6 over of power play is not, I mean, it's not, I won't say the intent is not there, they are just not that batting type, right? Babar and Rizwan. So usme jo hai, that's what I was saying earlier also, that if you look at other teams, they improvise given कि उस वक्त क्या हो रहा है, कौन सी पिच है, इस पे कितने रन बनने चाहिए, कितना क्या टोटल होना चाहिए. तो अगर आप ऐसी पिच पे खेल रहे हैं जिसपे आपको लग रहा है कि यार ये 180 की पिच है या 190 की पिच है, in my opinion, which is limited, Rizwan and Babar should not open. We should. Nabeel, that's my only weakness in my view. Nabeel, what do you think? Just following up, जो आसिफ भाई भी कह रहे थे, फाइनल में आज रात जो हमारे हिसाब से फाइनल हो रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टीम की, given these जो अभी weaknesses आसिफ भाई ने बताई हैं? या पहली बात तो यह है कि बस दुआ करें कि मार्कवुड खेले नहीं, क्योंकि अगर मार्कवुड खेलेगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी. वो कल कर रहा था प्रैक्टिस मरवा दिया. बाकी भाई पूरी पाकिस्तान से गुजारिश है कि ये बड़ी दुआ करें मार्कवुड नहीं खेले, क्योंकि आई थिंक दैट्स द इशू, राइट? एंड वही आसिफ भाई कह रहे हैं, आई एग्री विद यू आसिफ भाई. I think मेरी जो एक, अगर मैं can I just follow up on Asif bhai's point? I just, after this series, I just want Babar to be flexible. Okay, let's just try different things at the opening pair. That's it. Give somebody a chance, and if it doesn't click, fine, come back and start opening again. लेकिन अगर आप 2-3 साल से open कर रहे हो रिजवान के साथ और हर गेम में open कर रहे हो, क्योंकि you love opening, I get it, लेकिन you have to give it a chance, right? क्योंकि there might be, आपको नहीं पता कि हारिस ऊपर जाके आपके लिए ऐसा सेटअप करें कि आपके लिए और आसानी हो जाए, Babar, if you come on down. So my only ask of Babar is just give it a chance. उसके बाद if it ends up being कि Rizwan and Babar are our best openers, then we stick with that. I think as far as strategy for the game, I think it's I think वही बात है ना कि like Asif I said, Pakistan is best if we have a 150-160 score to chase, right? Target set करना जो है, शराब नीचे से आके या नमाज नीचे आके धमाके कर दे तो दूसरी बात है, लेकिन generally speaking, I think chasing is probably better for us. And because Pakistan, I think, can restrict England, even though England ने धमाकेदार बैटिंग की है,
लेकिन अगर आप लॉ ऑफ एवरेजेस देखें तो अगर उनके ओपनर्स बिल्कुल आउट नहीं हुए और उनकी मिडिल ऑर्डर आई नहीं तो शायद maybe they score 150 160, right? That's possible, especially with Pakistan's bowling attack. So mera, I mean, you can strategize around the coin toss. लेकिन मेरा ये होगा कि if we can, I think, Asif, I don't know what you think, but I think chasing is probably our bread and butter. If it's 150 160, अगर 180 हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा. इसमें फिर एक ये भी मसला हो जाता है ना कि जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे होते हो और हम वही विद द प्रॉब्लम दैट वी पुट इन फ्रंट, राइट, कि जो एक वीकनेस, इफ यू विल, दे आर अमेजिंग बैट्समैन, बट एक वीकनेस कि they are not a batsman that can give you a start to score 200, frankly, let's be honest, right? So वो एक डबल माइंड पहले से हो जाता है कि आप what is the target you want to give the other team, and उसमें जो है गलत शॉट लग जाती है. मगर 150 160 का टारगेट होता है तो आई टोटली एग्री विद यू नबील के फॉर अस आई थिंक द बेस्ट थिंग वुड बी टू बैट सेकंड. नाउ माय व्यू इज कि व्हाट वुड बी वेरी क्रिटिकल इन दैट केस, लेट्स अज्यूम कि इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है, हमारे उनके जो पहले जो 6 ओवर होंगे ना बहुत क्रिटिकल होंगे. अगर हमने उनको उनके 2 या 3 बैट्समैन को आउट कर दिया और हमने उनको होल्ड कर दिया तो आई थिंक शादाब एंड नवाज कैन बी वेरी impactful in the middle overs because वो उनको मारने की कोशिश करेंगे, they have to because they don't have the run. But अगर उन्होंने पहले 6 ओवर में आपकी पिटाई कर दी, which I hope they will not be able to, and with the wickets in hand, they have a lot of leverage in the middle overs, and then to finish the game strong, right? And to hit 180 plus. Which they bat till number 11 too. So yeah, that's the. I mean, yeah, exactly. So that's the issue, right? So they're batting, and they're very fearless in that sense, right? So they don't stop. They don't care if it's final or semi-final or. Yeah, उनके ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं है जितना पाकिस्तान इंडिया पे है, right? अगर इंग्लैंड हार भी जाए तो they won't really care. They're looking forward to the World Cup in Qatar, right? Because their team is वो soccer खेल रहे हैं, right? तो उनका ये भी है ना, ये लोग कहते हैं कि why do we play so timid? Because अगर हारेंगे तो घर चल जाएंगे, right? That's the fans का pressure, the fans का pressure है वो बहुत ज़्यादा immense है पाकिस्तानी और इंडियन टीम्स के ऊपर. So just sorry, Asif, are you saying something? Yeah, no, मैं ये कहूँगा कि sorry to cut you, but in there, my view is कि यार, I think the boys have done really well, right? And I'll be honest with you कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल होता तो बहुत स्ट्रेस होता. पता नहीं अभी शायद मैं ये कर भी तुमसे बात भी नहीं कर सक रहा होता अभी, right? नहीं भाई नहीं. With Pakistan, England, obviously, I'm stressed and all that, and I've दिल धड़क रहा है and all that stuff. But my view is कि यार, it's a game, right? And I obviously I want Pakistan to win, but अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारे तरफ नहीं जाता है तो the boys played well. The tournament in the end was a good tournament, right? What do you think about sharing the trophy अगर weather खराब हो जाए? वो भी मैच है. I'm all for it. I think we should do ये सबसे ज़्यादा ideal solution होगा मेरे ख्याल में. I won't mind that at all. Yeah, I have friends in here who I was supposed to go also, and because of work I could not, but they went in the first half, and once the Pakistan made the finals, actually there are a few folks who left yesterday to be there despite the fact कि जी rain और उसका chances है. तो in interest of a lot of my friends who are right now in Australia taking these long 16-17 hours flight to be there for the final, I really hope के final हो. Because they have invested a lot of their time to be there. Inshallah. So as far as the strategy is concerned, I think we are all three of us, हम तीनों की agreement है कि हमें चाहिए कि हम दुआ करें कि हम टॉस जीत जाएं, इनको हम पहले खेलने की दावत दें, इंग्लैंड को वो खेलें, वो 160 के अंदर हम इनको कंटेन करें, और बाबर और रिजवान 160 फॉर नो लॉस, जिस तरह से 150 फॉर नो लॉस किया था, 160 फॉर नो लॉस, 171 फॉर नो लॉस, तो हम जरा इंग्लैंड का रिकॉर्ड 171 फॉर नो लॉस करके हिसाब बराबर करें और फिर अल्लाह खैसला अपने घर आए. बट एक अगर हम पार स्कोर देखें एमसीजी के ऊपर पहले बैटिंग करते हुए, तो दैट इज 167 playing first, that is the par score. And if you talk about the winning total in the first inning, that is 181. So if you make 181 playing first, you're more than likely to win the game, right? And people batting first 16 times, people batting first have won it, and 13 times
the teams batting second have won it. So there's a slight bias towards people, the teams batting first, right? So एक तो हमने ये देख लिया कि हाँ हम उनको खेलने की दावत दें, but if we lose the toss and if they invite us to sort of bat, what do you think we should try and score? किस तरह से how should we go about our innings? I honestly think if we bat first and we can get it up to 160, I think हमारी bowling है इतनी अच्छी, और फिर swinging conditions भी हैं, right? Whether you bowl first or second, I think, और अगर matchups की बात है ना, क्योंकि अगर अपने obviously ये जो openers हैं, जो दो हैं अपने जॉस और जो दूसरा बंदा है, Hales, they are susceptible, right? They are susceptible to left arm seamers, right? And we have the best, right? तो उनका जल्दी out होना is possibility. और law of averages अगर आप देखें तो इन्होंने इतना अच्छा किया तो शायद वो जल्दी आउट हो जाए. तो I think अब उनकी middle अभी tournament में इतना game नहीं देखा. England did lose to Ireland, by the way, right? England lost to Ireland. उनका middle जो है batting lineup है, it's great on paper, but it hasn't clicked all together. It hasn't been amazing throughout the tournament. So I think, Asif, I think if we do 160, I think I would be happy going into Bulls. Yeah, I'll be very nervous. I'll be honest with you. 160 is not a winning target because उनकी strength मैंने देखा है. मैं बल्कि कल बैठे हुए मैं यही कर रहा था, इंग्लैंड की गेम देख रहा था कि जी क्या उनकी, और they have so much bench strength. और मैं I was very surprised कि जी वैसे आप पढ़े तो कहते हैं कि जी वो जॉस नहीं चला है और ये नहीं हुआ है, बट जॉस ने जो न्यूजीलैंड को मारा है उसने 60-70 रन किए थे उनके खिलाफ, सॉलिड, और लंबे सीधे साइड पे हर जगह मार रहा है. तो and the batting lineup, as you said, Nabeel, goes all the way to number 11, right? So my thing is that if you're batting first, you absolutely positively have to, अगर हसन ने जो स्टैट्स दिए हैं, आपको 175 तो मिनिमम करने हैं. कुछ उससे कम जो है ना, I think that is a par score. If 180 is what you're saying, 181 is the winning target, then at least you have to play with the intent that you score at least 175. Nothing less, more the better. और अगर उनको आपने बैटिंग कराया तो then you really have to push them and get them out, because again हमारी वैसे भी हालत टाइट होती है थोड़ी सी, we have that. So but our bowling, I think where we should really look forward to, right, it's everybody everybody talks about runs, and which is fine because 200 बनाने या 175 बनाने, बट हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग नहीं है, हमारी बॉलिंग है. तो हमें वी शुड आल्सो फोकस ऑन बॉलिंग कि व्हाट कैन आवर बॉलिंग डू. And I'll go back to again the stats, which is amazing, phenomenal stat. And if you look at I don't have it in front of me, but I was looking at it. We are much better than the other teams. New Zealand was right up there after us, then South Africa, which is out of the tournament. But our bowling average of what we do, so it's not easy for any team to score against us. It's not going to be a walkover for England. जैसे इंडिया की गेम में था, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो पता है. It's a totally different bowling attack, right? India has amazing batsmen, but they don't have anywhere close to our bowling attack. Our bowling attack, from fast bowler to where Shadab is, to all those things, it's and I think Hayden said it best कि भाई अगर आप देखें in the current setup, in the current construct of the team, which I think will be the same team जो हमने खेली है semi-final में, you have Wasim Junior, Shaheen, you have Haris Rauf, ठीक है जी, फिर आपके पास शादाब है, फिर आपके पास नवाज है, and आपके पास जो है इफ्तिखार भी है, if push come to shove. So Naseem Shah bhi hai aapke paas, right? And Naseem Shah is bowling really well. I mean, people are saying hey, he's not taking wickets, this and that, but Naseem is becoming the professor of fast bowling, if you will, because he's bowling, especially in T20s, just slower ones. Slow balls I mean, people are expecting him to bowl 150, and he's bowling, and people are not able. So again, this is what I go back to why we should appreciate in the from the country we come from, कि the team is playing as a unit. कि नसीम शाह ये नहीं चाह रहा है कि यार मुझे सबसे ज्यादा विकेट लेनी है, या उसको मालूम है कि शाहीन को लेनी है. That's what everybody has a role in the team, and they are playing as a role in the team to win the game, right? And that is big. कि ये नहीं है कि मुझे शाहीन
विकेट लेनी है या हारिस से ज्यादा विकेट लेनी है मुझे. Exactly, and there's a game plan. You can clearly see there's a game plan that they're following in terms of bowling, in terms of batting, middle order, etc. मेरा भी यही है कि Josh Butler इस वक्त दुनिया का मेरे ख्याल से T20 में he is the best batsman across the board. मेरे ख्याल से nobody comes close to him. Surya Kumar maybe, Milan maybe, but Josh Butler is the one right now. और मेरे ख्याल से if we get him out cheaply in the first 6 overs, Pakistan has a chance. Pakistan definitely has a chance because of the fact जो हमने अभी highlight की कि इनका जो middle order में test नहीं हुआ हुआ इस तरीके से. Harry Brooks भी है, Malan भी हो सकता है खेल ले, और भी इनकी बैटिंग 10 नंबर तक बैटिंग जा रही है, सारे मारने वाले हैं, they don't hold back. लेकिन Josh Butler if he gets out in like 10-15 रन के अंदर आउट कर लिया, we are in with a chance inshallah. Question to you guys. अभी तक के World Cup में who do you think is for you has been the star performer? Yeah, I'll start with Pakistan. I think for Pakistan, I really feel that Shadab. Not too many people talk about Shadab, but for many reasons, just not for his bowling, but some of the critical innings he played, the run out in the last game. But then also, I feel he's a very good vice captain. That the support he provides and the way he backs up Babar is a very important part, right? I mean, there is a role of vice captain. People really don't. So I think, given all the thing of everything, I'll pick Shadab from Pakistan. Kohli played amazing from India side, and again, as you said, KG, England ke side mein unke bowlers, some of the bowlers Wood and others have been devastating, but Butler is the key player in there. He had few good innings. Yeah, I think Alex Hales मैं कहूँगा कि उसकी जो comeback है, that's been pretty amazing. I mean, I think he's I don't know, I haven't seen. I'm trying to think through all the statistics. I don't know how he did on all the matches, but I think he was okay. But I mean, again, he played well against New Zealand. He has played well against in the last again. Obviously, just like we are very confident with Babar and Rizwan scoring, they are also very confident with Alex and Josh scoring in the last game. So. Yeah, exactly. So I say, I agree with you. I think Shadab की जो है वो X factor बन गया है. वो ऐसा बन गया है कि उसकी जगह जो है ना, मतलब कि हर टीम में जो है ना, you cannot question his place in the team. उसने जो run out किया था अभी वो जो fielding में है. कॉनवे को जो आउट किया उसने, हाँ. वो तो मतलब कि that was a huge turning point. और फिर उसकी जो bowling, I mean, he barely ever gets hit for sixes. Spinner की तो सबकी तबाही हो रही है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में. He's the only one who's not giving up that many sixes, right? So yeah, I agree. I mean, I think Shadab has been the most consistent by far. Completely agree with you. Shadab for me as well. मतलब उसका जो influence है, जैसे अगर आप उसको भूल भी जाए कि वो फील्ड में क्या करता है, उसको influence अभी मैं इंटरव्यू देख रहा था नासिर हुसैन के साथ, उसका बहुत ही level headed individual, very nice individual, very talented, bowling भी करेगा, batting भी करेगा, fielding भी करेगा, उसकी tweets भी देख लें, बड़े balanced किस्म के tweets होते हैं उसके. So I love his personality. I think he has a very positive influence on the team. तो okay, so I think we've discussed काफी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया. मेरे हिसाब से अगर आप मेरी ओपिनियन पूछे, ऑफ कोर्स दिल कह रहा है पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन इंग्लैंड ऑन पेपर इंग्लैंड इज अ बेटर साइड, वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट. इंग्लैंड इज अ बेटर साइड. पाकिस्तान की बॉलिंग इंग्लैंड से स्लाइटली बेहतर है, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग पाकिस्तान से 20 गुना बेहतर है, राइट? सो इट्स नॉट इवन स्टीवंस. England has a slight edge, लेकिन of course T20 में you don't know what's going to happen. Of course weather plays a role, toss plays a role, and all of those kind of things. Do you have any predictions? Do you guys have any predictions? Yeah, my heart and mind says it's Pakistan. Dil Pakistan, Jan Pakistan, Dimag England. Dimag Pakistan. I mean, I have no doubt. I honestly think कि अगर आप percentage देना probability, तो probability बहुत, this is as 50-50 as it gets, honestly. अगर आप, क्योंकि there are two things, right? एक तो एक skill है, like you said, अगर आप पेपर पे देखें, इंग्लैंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो इंग्लैंड कैसी है? So I'll say 55-45. लेकिन जो दूसरी चीज है, that's momentum. जो momentum है और जो इंग्लैंड जो सोचा है कि यार ये टीम कहीं से बिल्कुल डेड से निकली है, और जो हमारा momentum हमारे पीछे है ना, that edge goes to Pakistan, right? और like I said, there's so many variabilities, things have to go right. आपकी यार क्रिकेट में किस्मत की बहुत बात होती है. किस्मत जो होती है ना, जब आपकी जैसे 92 में जो जीते थे, वो मतलब कि किस्मत थी, at the end of the day, yeah, we played well, but things had to go right for us. That feeling, honestly, that's what England has got to be scared of, and we have the talent to back it up. Right? क्योंकि ठीक है, उनकी बैटिंग is amazing, but
when it comes to क्योंकि अभी श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने मर के उन्होंने चेस किया, right? England, right? तो ये भी होता है, आयरलैंड से भी हारे हैं, right? So it's not like they're not 100, they're not a perfect team by any means, right? So I think they're not unbeatable. The power that we have, right, is the inconsistency. Yeah. England is a very prescriptive. They have all the data, they have everything, but I'll tell you कि अगर तुम जॉर्ज बटलर के पास जाओ और उससे कहो कि यार you have your choice कि तुम कल और आज जब भी फाइनल है तुम किससे खेलना चाह रहे हो, which team, I bet you he will not say Pakistan, because on a given day, he knows he can train against New Zealand, he can train against Australia, he can train against India, but with Pakistan, so ये भी आपको एक पहलू रखना है कि जब गेम हो रहा है दूसरी टीम भी जो है वो बहुत आराम से मैदान में नहीं उतर रही है, चाहे उनकी जितने भी अच्छे ओपनर हो जो भी हो, उनके लिए भी पाकिस्तान से उनको मालूम है या तो हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे या तो हमारी जो है ना तबाही हो जाएगी. So nobody wants in that thing, and that's a power, right? And we have to play with that strength in that sense. In the end, कुछ आप लोगों को आखिरी कुछ अल्फाज बोलने हैं पाकिस्तान टीम के सपोर्ट में, कुछ बोलना है तो आप प्लीज बोल सकते हैं. This is your chance. The only thing I will say is कि again it's funny because there were things that happened in the semi-final in 90 जो 92 or final. I remember that very vividly. I was in New Jersey. और I was studying at New Jersey Institute of Technology, NJIT में था मैं, वहाँ हमने बड़े हॉल में थिएटर में देखा था फाइनल, और उसमें एक ऐसा वाकया हुआ था जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बता सकता हूँ इस वीडियो में, मगर वो आपको बाद में कभी बताएंगे. तो उससे जो है बड़ा ही मुझे सिमिलर इंस्टेंस लग रहा है कि जो उस वक्त इंजी था प्लेयर, तो अब जो है हारिस है, आपको जो है दूसरे बैट्समैन आपको परफॉर्म कर रहे हैं. उस वक्त वसीम अकरम था, तो अब शाहीन जो है उस तरह से आपको इन स्विंगिंग यॉर्कर्स करके आउट कर रहा है या वो कर रहा है. तो I really hope, and the best part is the unity within the team, so I really it would be so cool. Yeah, देखिए एंटरटेनमेंट तो फुल वैल्यू ना, यही बात है ना. पाकिस्तान की वो कहते हैं ना कि बेस्ट जो फिल्म है ना पाकिस्तान में जो बनी है, अभी कहने मौला जट है, लेकिन ये जो फिल्म है ना ये 30 साल से जो है it's been the best movie, and entertainment wise it's been unbelievable, and they'll continue to entertain, and that's why the world loves Pakistan cricket as well, right? So I think at the end of the day we're getting our passive whistle. We just want the boys to do amazingly well, and I think they will, because they have the talent. I think this time to do it. एक मेरे पास fun fact quiz है आप लोगों के लिए कि 92 वर्ल्ड कप में इस टीम में से कौन-कौन बच्चे जिंदा थे. यानी ये जो अभी प्लेइंग है इस मतलब कि 92 हम लोग 92 कहते हैं, 92, लेकिन इनमें से मोस्ट लड़कों ने देखा ही नहीं था क्योंकि पैदा ही नहीं हुए थे. इफ्ती चाचा तो शायद 20 साल के थे 92 में. और मतलब कि और कौन हो गया, शान मसूद was barely, and I think the third guy was Fakhr Zaman was I think board. उसके अलावा पूरी टीम जो है is under 30. Wow. is basically but they weren't, वो शायद पैदा उस साल हो गए थे लेकिन they weren't around when the final happened. So and that's the thing, right? कि इतनी young team, इतनी dynamic team, इतना talent. I think Haroye Jito, I think we love this team, and I think the fact that they even came this far has been unbelievable. Yes. I think, but I honestly पहले होता ना कि यार बस जीत जाए किसी तरह. इस दफा honestly we have the talent to win it. Like it's not that तुक्के से नहीं जीतेंगे. अगर जीतेंगे तो क्योंकि हमारे मैचअप ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हम हमारे बॉलर्स उनको चीपली आउट कर सकते हैं. उनकी बॉलिंग also अगर मार्कवुड नहीं खेलेगा तो उनकी बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, right? उनके जो बॉलर्स हैं और they're not like top line, right? They're not the greatest bowlers in world cricket. So I think our batsmen can play them as well. So I think we have a very good chance to win, and inshallah we will. तो win और lose, जीते हारे, हमें तुमसे प्यार है, but जलील मत करवाना प्लीज, खुदा का वास्ता है. One sided match मत करवाना यार. अंडा मत देना भाई, प्लीज अंडा मत. हाँ, अंडा मत देना और one sided मत कर देना यार. इसको मैच को थोड़ा सा क्लोज लेके चले जाना, अल्लाह का वास्ता है यार. इंडियंस को फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सोशल मीडिया के ऊपर इन लोगों की कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे. थोड़ा सा क्लोज लेके चले, 2-4 विकेट ले लेना एटलीस्ट यार. मतलब 10 विकेटों से नहीं हारना बस. नहीं सर, हम जीत रहे. आप ये कैसी फीलिंग लेके जा रहे हो यार तुम फाइनल? नहीं, we are winning.
ये फीलिंग तो है ही नहीं, मतलब कि अंडे दे वाली फीलिंग तो मेरे बिल्कुल honestly I don't I'm have telling you, I'm very clear. I'm very clear. This game is ours, and the boys will perform. And at the end of the day, what the output will be there, right? I mean, input would be there. Output जो भी होता है कि जी result क्या होता है, hopefully in our favor. But I have 100% confidence that this team will go out and give their 100%. And that's all what we can. In the words of Asif bhai's favorite Imran Khan, कोशिश हमारे हाथ में है, बाकी अल्लाह के। ये कहते हैं कोशिश हमारे हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। चलिए जी एक नारा लगाते हैं पाकिस्तान का, and then inshallah we'll do well. Good luck to all of us. Good luck to the entire Pakistan. Pakistan जिंदाबाद। जिंदाबाद। टाटा बाय बाय।